हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रैक्टिस मोड। कई सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, जैसे आरबीआई असिस्टेंट की डेट्स आई गई हैं, एसबीआई क्लर्क और आरबीआई ग्रेड बी नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। तो इन सारे बैंकिंग एग्जाम्स में एक सेक्शन कॉमन होता है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का। एंड उस सेक्शन में एक टॉपिक जो कई बार पूछा जाता है वो है क्लोज टेस्ट का। So today we are going to share with you a tip which you should follow, and the tip we should, what you should avoid doing. So let's first get a little bit into the concept of closed test. What is a closed test? Closed test is a combination of reading comprehension and fill in the blanks. So basically, you're given a passage in which certain words are omitted, and you need to fill the words on the basis of the context and the central idea of the passage. Okay, सो दैट इज ऑल अबाउट क्लोज टेस्ट। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार जो इतने वर्ड्स होते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं, तो यू नॉट एबल टू फिगर आउट कि क्या फिल करें और क्या फिल ना करें। आई गिव यू अ टिप, डोंट एवर look at the options first. If the options are too close to each other, this will help to a great extent. So how you should go ahead is what I'm going to tell you. Read the passage and without looking at the options, and think about the first word which comes to your mind. If that option is, if that word is there in one of the options, voila, you are done. If not, then the next word which is closest to it. Okay, but for that you need to understand the central idea and the flow of the passage. Okay, so this is one tip which is going to help you if the options are too close to each other. Okay, and one more tip which I'm going to provide you is about what you should avoid doing. That is about treating the sentences. So if you're given let's say five uh, blanks in a passage, don't ever treat any sentence on an individual basis. Okay, so you have to keep in mind the complete passage, not just a single sentence. ओके, सो अब होता क्या है कि अगर आप एक सिंगल सेंटेंस को कंसिडर करते हैं तो सेंटेंस के हिसाब से एक या दो वर्ड वहां फिट हो सकते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट को जब आप देखते हैं पूरे पैसेज का, देन यू विल सी अ डिफरेंट वर्ड ऑल टुगेदर। ओके, सो दीज वर द टू टिप्स। आई जस्ट rephrase this thing, summarize it. कि don't look at the options in the pehle, and second is don't treat each and every sentences individually. That's all. Thank you.